Okay, so let's start the definition of the speed. Okay, so in the previous video, the next topic is what is the speed. Okay, speed of an object is defined as the time, rate, change position of an object in any direction. It is measured by the distance traveled by the object in unit time in any direction. Means बोल रहा है कि distance travel upon time taken to travel the distance is equal to speed. Okay, ये फार्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपन कितना टाइम लिया वो हो जाएगा हमारा स्पीड हो जाएगा. एंड देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्पीड. इट इज़ स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता और टाइम कोई डायरेक्शन नहीं होता. So from the formula speed is equal to distance travel upon time taken. So there is a no vector quantity numerator and denominator both. So this is scalar quantity. Second point, it gives no idea about direction of motion of an object of the object. Okay, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है सो ये मतलब ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये कोई आइडिया ऐसा नहीं देता. स्पीड अगर स्पीड दिया है कि 2 मीटर पर सेकंड है तो बस ये स्पीड है, कोई डायरेक्शन नहीं देता कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है. And the third point is it can be zero or positive but never negative. Means it can be zero or positive but never negative. Means the speed negative कभी नहीं हो सकती because this is a scalar quantity and have a magnitude not a direction. So ये always positive है तो zero होगी. Okay, नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा पॉजिटिव होता है. तो speed is equal to distance travel upon time taken. When the distance travel is always positive and time taken is always positive, then both numerator and denominator are positive, then the speed is always be positive. Okay, unit in cgs centimeter per second, distance unit in cgs centimeter upon time unit second. Okay, so fourth point. Okay, okay, and SI meter per second, distance travel in meter upon time in second. Okay, okay, so what next? Okay, dimension is m0 l1 t power minus 1 because okay, because distance unit by the formula distance unit is l and time taken is t. Okay, when t is go to the numerator then l t k power minus 1. Okay, so this is the dimension. Okay, okay, so what is the next? Okay, next is the type of speed. Okay, speed is categorized in four parts. First is uniform speed, second is non-uniform speed, and third one is average speed, and fourth one is instantaneous speed. So what is the uniform speed? So let's see the definition. An object is said to be with uniform speed if it cover equal distance in equal interval times. Means it cover the equal interval, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. मीन्स अगर वो नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर ही ट्रेवल करेगा अगले नेक्स्ट 2 सेकंड में. ओके, 2 मीटर ही ट्रेवल करेगा. सो तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में है. ओके, ओके, सो ओके यू कैन सी द एग्जांपल. नाउ सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. So let's see the definition of the non-uniform speed. An object is said to be moving with variable speed if it cover equal in unequal interval time. Means or unequal distance in equal interval time. Means वो 2 मीटर ट्रेवल किया है फर्स्ट 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में ये 3 मीटर ट्रेवल कर गया. मीन्स ये डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल नहीं है, वेरिएबल है, वेरीज कर रहा है. सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, and next one is the average speed. Okay, so let's see the definition of the average speed. Okay, average speed, when an object is moving with a variable speed then the average speed of the object is the constant speed which object cover the same distance in a given time as it does while moving with variable speed during given time. मीन्स ये बोल रहा है कि
इधर स्पीड वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं है। जैसे अगले सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, अगले नेक्स्ट सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। तो इन केस में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। सो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, हमारी जो ऑब्जेक्ट है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपन टोटल टाइम कितना लिया है, टोटल टाइम कितना लिया है उससे डिवाइड कर देते हैं। ओके, टोटल टाइम कितना लिया उससे डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज स्पीड हमारी आ जाती है। ओके, एवरेज स्पीड आती है। ओके, जैसे कि एग्जांपल है नोट के तौर पे, इफ एनी कार कवर डिस्टेंस x1 x2 इन टाइम इंटरवल t1 t2 देन। ओके, देखो x1 टाइम t1 में, x2 टाइम t2 में टाइम में ऐसे कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक, जितने टाइम इंटरवल तक। ओके, टाइम कितना लिया? t1 t2 t3 ऐड करके डिवाइड कर दिया तो हमारा वहाँ से एवरेज स्पीड आ गया। ओके ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज वेलोसिटी। अभी स्पीड हो गया हमारा, वेलोसिटी क्या होता है देखेंगे। तो देखते हैं, इट इज़ डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, डिस्टेंस था। यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि हाउ मनी डिस्प्लेसमेंट इन हाउ मेनी टाइम अपॉन हाउ मेनी टाइम, ये दिया है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक दिया है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो एंड so the whole formula is d by t displacement upon time. So the velocity is also a vector quantity, have a direction. Okay, so its direction is same as that of displacement. वही है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है टाइम की, और जो इसका डायरेक्शन होगा वही सेम डायरेक्शन होगा इसका। तो सेकंड पॉइंट हो गया, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज द स्पीड, क्योंकि सेम है यूनिट एंड डायमेंशन होगा, क्योंकि इसकी यूनिट कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब जैसे उसका जो यूनिट है डिस्टेंस कवर का, वो लेंथ एल ही होगा, मीटर ही होगी, और टाइम का सेकंड ही होगा, तो यूनिट एंड डायमेंशन विल बी सेम। ओके, टाइप ऑफ वेलोसिटी। Velocity is categorized into four parts mainly. First one is instantaneous velocity, second one is average velocity, and third one uniform velocity, and fourth one is non-uniform velocity, like in speed. Okay, so first from let go from first instantaneous speed. Define the velocity at some particular instant. Instantaneous speed वो स्पीड होता है जैसे हम किसी पर्टिकुलर सेकंड में पूछ रहे हैं स्पीड कितनी है। जैसे कोई बाइक मैं ले जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किसी टाइम पे पर सेकंड, किसी उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, 4 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है, वो इंस्टेंट स्पीड होती है। सो लिमिट डेल्टा डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर वेक्टर मीन्स ए डिस्प्लेसमेंट अपन कितना टाइम, और डी आर बाई डी टी, ये हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लाइक इन previous case average speed total distance upon total time, here average velocity, so here total displacement upon total time. Okay, okay, so next is uniform velocity. So let's read the definition first. A particle is said to have uniform velocity if magnitude as well as direction of its velocity remains same, and this is possible only when the particle move in same straight line रिजर्व डायरेक्शन। मीन्स बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड के साथ, मीन्स जो उसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, उसके साथ साथ अगर उसका डायरेक्शन भी सेम है, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ओके, देखो, इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम, ओके, सो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ये मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, बट डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड से उस केस में, स्पीड के केस में बस मैग्नीट्यूड देखते थे, 2 मीटर पर सेकंड से आया किसी भी डायरेक्शन में आया कोई दिक्कत नहीं, वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी बस, बट यहाँ पर बदल जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह जाएगा इफ डायरेक्शन चेंजेस। ओके, सो यस, ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? Next is non-uniform velocity. Let's read the definition. A particle is said to have a non-uniform velocity if either of magnitude or direction of velocity changes or both changes. Means बोल रहा है कि non-uniform velocity तभी होगा if magnitude changes or the direction changes or both changes. Means 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बट डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है,
तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। 2 मीटर पर सेकंड से नहीं जा रहा है, एक मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ऐसे ऐसे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंडर में आ जाएगा। ओके ओके सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन द स्पीड एंड velocity. Okay so first one in the speed, it is the time rate of change of distance of body, means ये कहता है rate of change of the distance होता है, and the second one is rate of change of displacement of the particle होता है। okay so second point, it tells nothing about the direction of motion of particle, means ये scalar quantity होती है, ये direction के बारे में बिल्कुल नहीं बताता है। so it tells nothing about the direction के बारे में कुछ भी नहीं बताता। and velocity, it tells the direction of the motion of particle because this is the vector quantities. Displacement have a direction, so the velocity have a direction because velocity is equal to displacement upon time. So if displacement have a direction, then velocity also direction. Then it tells the direction of the motion of the particle. Okay, okay. So third point is it can be positive or zero. Speed कैन बी पॉजिटिव और जीरो, मीन्स ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगी या तो जीरो, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल हमेशा जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस ओके जो डिस्टेंस होगा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा हमेशा, और डिस्टेंस बाय टाइम होता है हमारा स्पीड। सो इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर बी नेगेटिव। ओके एंड थर्ड वन इन वेलोसिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, it may be negative because they have a direction, so it may be negative or positive or zero, because displacement becomes zero when the final initial point is same. Okay so it also become a zero. Okay so negative when the uh, previous point in the third quadrant regarding the first quadrant. Okay okay so if the displacement is negative, then the velocity is also negative. Negative is in direction, not means like quantity. Okay in direction negative, velocity in direction negative, but not by the magnitude. Nothing is negative in the magnitude. Okay so fourth point is it is scalar quantity. Yes, obviously it is scalar quantities, and it is vector quantities in the velocity. Okay so yeah so, so there are some notes. The magnitude of instantaneous velocity and instantaneous speed are equal. Yes, because that instantaneous velocity and speed both have same magnitude and have a same direction that time. Okay that determines of instantaneous velocity by using, okay that's it. Okay good.